नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो द ब्लूज लाइव। शाम के 5 बजे मतलब द यूजुअल सस्पेक्ट्स फॉर फॉलो द ब्लूज लाइव आ जाते हैं आपके सामने वो सारी चर्चा लेकर इस टीम के इर्द गिर्द जो आप सुनना चाहते हैं। ओनली फॉर यू। माय नेम इज ताने तिवारी, मेरे साथ रेजिडेंट फॉलो द ब्लूज इनसाइडर रोहन देशमुख कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, सीनियर क्रिकेट इन्फो जर्नलिस्ट शशांक किशोर भी। लेकिन सबसे पहले अच्छा आगे आ जाइए, फिर तो बुलाते हैं। वेलकम वेलकम शशांक भाई। मुझे लगा आप थोड़े से लेट हैं क्योंकि हम तो समय के पाबंद हैं, लेकिन आप आ गए। आई सी और फरारी फैन एज वेल, उस पर चर्चा करेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। पहले ब्लूज की चर्चा। रोहन भाई, भारतीय टीम उस टेस्ट सीरीज की तैयारी कर रही है। आई हर्ड एक राहुल द्रविड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। व्हाट्स द डीट्स, क्या हो रहा है? व्हाट आर द लेटेस्ट हैपनिंग्स? The biggest thing, Tanay, good evening first to you and to Shashank. Biggest thing which Rahul Dravid has said today, जो उन्होंने कहा है कि केएल राहुल जो है आज इस पूरे टेस्ट सीरीज में विकेट कीपिंग नहीं करेंगे। केएल राहुल को जो है एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिलाया जाएगा। दिस वाज सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेड कंसिडरिंग कि हमने देखा था कि 2 विकेट कीपर, स्पेशलिस्ट विकेट कीपर्स को स्क्वाड में इंक्लूड किया गया था। केएस भरत को इंक्लूड किया गया था, ध्रुव जुरैल को इंक्लूड किया गया था, और तो इट वाज somehow on expected lines, but the fact now that विराट कोहली भी अभी नहीं खेलने वाले पहले 2 टेस्ट मैचेस, तो इट मेक्स a lot of sense कि केएल राहुल जो है सिर्फ अपने बल्लेबाजी पर फोकस करे। एंड ऑब्वियसली इंडियन ट्रैक्स पर जिस तरह से भारतीय खेमे में 3 दिग्गज स्पिनर्स है, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन और अक्षर पटेल, तो इट मेक सेंस कि आपके पास जो विकेट के पीछे जो बंदा खड़ा है, ही शुड बी समवन हु हैज बीन डूइंग इट फॉर इयर्स। केएल राहुल डिड अ फैंटास्टिक जॉब इन द लिमिटेड ओवर्स एंड आल्सो इन द टेस्ट सीरीज इन साउथ अफ्रीका। लेकिन जब इंडियन कंडीशंस की बात होती है और दूसरी ओर जब विराट कोहली जैसे खिलाड़ी भी नहीं है और केएल राहुल एज अ बैट्समैन यू नीड हिम, इट मेक्स सेंस कि यू हैव अ स्पेशलिस्ट विकेट कीपर डूइंग द जॉब फॉर अस। That's actually very interesting because we've heard this from the team management शशांक भाई पहले भी कि आपको बहुत engaged रहना होता है इंडियन ट्रैक्स पर for those 90 overs throughout the day in this heat and humidity। आसान नहीं होता, और फिर जब उतनी added जिम्मेदारी हो in terms of batting now, जैसा रोहन भाई ने बोला, क्योंकि विराट कोहली भी नहीं है आपके पास, so the obvious choice is to not make KL keep। But is it as obvious a choice to know who the wicket keeper in that playing 11 is going to be, KS Bharat, or are you tempted to try Dhruv Jurel? I think KS Bharat, you think, is the front runner, considering the fact that he's already done the job during the home series against Australia last year. He was also part of the WTC final. The only slight concern that's with KS Bharat is, can he bat the same way as what KL Rahul can offer or Rishabh Pant can offer? Obviously not. But they've believed in him. They've kind of groomed him with the India A system for the last 3 years. Ever since MSK Prasad was chairman of selectors, he's been part of the system in and around the periphery of the national team. And he's been on most of the 8 tours that India have gone overseas precisely for this moment, where you are able to step in when there is a requirement. So I think considering the fact that he's already got some experience of India A, also remember he did exceedingly well in that final day of the India A game against the England Lions in Ahmedabad just earlier this week, where they were down in the dumps chasing 480 on the final day. He comes in and makes a 90 odd not out to save the game. I think that was an exceedingly good knock. So I think he's got the confidence of runs. He already showed he can be a very good wicket keeper, although last year against Australia he did have his fair share of struggles on turning wickets. So you can only imagine how tough it will be for someone like a Dhruv Jurel coming in straight away. So I think to begin with, it'll be KS Bharat who is the front runner to keep wickets now that we know Rahul isn't going to keep. रोहन भाई, आप कुछ कहने वाले थे? हाँ, मैं वही शशांक को ये पूछने वाला था कि जिस तरह से जो कॉन्फिडेंस आया रहेगा, जो मैच हुआ था इंग्लैंड लायंस के खिलाफ, कितना कॉन्फिडेंस वो लेके जाएंगे बल्लेबाजी में, क्योंकि काफ़ी जो है चर्चा ये हो रही थी ना शशांक कि जो है कहीं ना कहीं जैसे आपने जिक्र किया कि क्या वो फायर पावर लाते हैं, क्या इस टीम को एक्चुअली ज़रूरत है वो विकेट कीपिंग फायर पावर की इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, क्योंकि हमें पता है कि बिहाइंड द विकेट्स वी नीड समवन, बट इन टर्म्स ऑफ बैटिंग एट दैट पोजीशन कितना इंपॉर्टेंट रहेगा वो रोल? Massive. I think it's extremely important that your keeper is able to contribute, and we've seen these days across test cricket, across different teams, you need batters who are able to you need keepers who are able to contribute and hold their own with the bat. That's what Rishabh Pant has given us. That's what MS Dhoni has given us. That's what we've got from KL Rahul in the couple of games that he kept in South Africa. So you need the keeper to be able to bat.
So KS Bharat, in terms of weighing in, his form with the bat, I think that knock in the final innings in Ahmedabad will give him a lot of confidence going forward. Naturally, domestic cricket में KS Bharat का style है, it's an aggressive style of batting. That aggressive style हमें test matches में अभी तक देखने को नहीं मिला है. And there are multiple reasons. I mean, he's already had 4 test matches in India last year on tough wickets. Those wickets were really turning from day one, and we all saw what happened, where matches were finishing in 3 days and 3.5 days. So those are tough wickets for anybody to come in. So imagine for a youngster coming in and playing your first set of knocks in test cricket on those wickets. It's really hard. So you need to give him a little bit of time. I think I personally thought he'd also keep in the West Indies where, the wickets may not turn as much and he'd get his opportunity to get a couple of good knocks in. That didn't happen. But now that Ishan Kishan is unavailable and KL Rahul isn't keeping, he should get a long run, at least for the first 2 games or 3 games, and then judge his batting skills. So the knock in Ahmedabad should definitely give him a lot of confidence going forward. तो there seems to be a consensus, at least amongst the three of us, कि KS भारत ही खेलेंगे ahead of ध्रुव जुरेल. जैसा कुछ देर पहले हमें रोहन भाई ने बताया, भारतीय हेड कोच राहुल द्रविड़ ने कहा कि आप KL राहुल से विकेट कीपिंग नहीं कराना चाहेंगे. In that case, what should the playing 11 look like? हमने पूछा इरफान पठान से, उन्होंने बनाई अपनी प्लेइंग 11. हम दिखाएंगे आपको अभी. हाँ जी सर, पहला टेस्ट मैच है. अब पहला टेस्ट मैच में प्लेइंग 11 क्या होगी, थोड़े चेंजेस होंगे जरूर. विराट साहब नहीं है भाई, विराट कोहली, जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि कमाल के फॉर्म में है. उनको मिस किया जाएगा पहले 2 टेस्ट मैच में. टीम बनाते हैं प्लेइंग 11, ठीक है. रोहित शर्मा, ठीक है. जायसवाल, साथ में ओपनर लेफ्टी बढ़िया काम कर रहे हैं. नंबर 3 पे गिल साहब. नंबर 4 वाला सवाल कौन, मेरे हिसाब से केएल राहुल. केएल राहुल एकदम परफेक्ट है क्योंकि ओपनर भी है और उनके जिस तरह से गेम रहता है वो बढ़िया. नंबर 4 पे ना अगर विकेट जल्दी भी गिर जाती तो संभाल लेंगे. फिर श्रेयस आ जाएंगे, ठीक है. नंबर 6 पे बापू जडेजा, ओके. नंबर 7 मेरे हिसाब से, ठीक है, टीम शायद कुछ और सोच सकती है, अक्षर पटेल. इनकी बैटिंग बहुत इंप्रूव हुई है तो नंबर 7 पे उनको थोड़ा सा ना प्रमोशन दीजिए, ऊपर बैटिंग कराइए. भरत साहब विकेट कीपर, ये आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है. अश्विन नंबर 903 स्पिनर हो गए आपके पास. जडेजा, अक्षर और अश्विन. अब बुमराह का डिमोशन हुआ है नंबर 10 पे, वरना ऊपर बैटिंग करना पसंद करते हैं. और सिराज. ये है मेरी प्लेइंग 11 ये पहले टेस्ट मैच के लिए. आप लोगों को कैसे लगी आप बताइए, कुछ चेंज करेंगे? आप लोग बताइए भाई, हमें कमेंट सेक्शन में कुछ चेंज करेंगे कि नहीं. लेकिन ये बात सही कही इरफान भाई ने कि डिमोशन हुआ है. जसप्रीत बुमराह का वो कहेंगे, वो याद नहीं है इंग्लैंड से हम खेले थे, 35 रन मारे थे उस ओवर में. एक स्टुअर्ट ब्रॉड याद नहीं है. लेकिन उस बैटिंग ऑर्डर में एक और चीज रोहन भाई, एक और बड़ा मौका श्रेयस अय्यर के लिए. आज कुछ खबर आ रही थी भारतीय टीम के नेट से उनके इर्द गिर्द, जरा उसके बारे में कुछ बताइए हमें. लेकिन श्रेयस पे जाने से पहले इरफान भाई ने जिस तरह से बैटिंग ऑर्डर बनाई है ना, नंबर 9 तक बैटिंग कर रही है इंडिया. अश्विन के भी टेस्ट सेंचुरी है नंबर 9 पे, तो अच्छा काउंटर है ये. बैसबॉल अगर आपने भी जसप्रीत बुमराह को नहीं है ना नंबर 10 35 रन बनाए. हाँ, वो भी है. अच्छे जो है बल्लेबाज तो फिर पूरे लाइनअप में हो जाते हैं. लेकिन श्रेयस अय्यर की एक बात हुई थी आज कि थ्रो डाउन खेलते वक्त ऐसे चीज़ें देखने को मिली, पिक्चर्स दिखे हमने सोशल मीडिया पे कि उनको जो है चोट लगी थी. लेकिन उसके बाद जो है काफ़ी देर तक उन्होंने जो है बल्लेबाजी की. अक्सर देखा है हमने, शशांक ने भी काफ़ी नेट्स कवर किए हैं. शशांक को भी पता है कि जिस तरह से अपने थ्रो डाउन एक्सपर्ट्स नेट्स में गेंदबाजी करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो एक 1-on-1 मैच ही चल रहा है वहाँ पर. तो इट इज़ एक्सपेक्टेड. मैच काइंड ऑफ सिमुलेशन के हिसाब से मैच में भी गेंद लगती है, यहाँ पर नेट्स में भी उन्हें लगी. लेकिन थैंकफुली ही इज फाइन. ही वेंट एंड बैटेड आफ्टर टेकिंग बिट ऑफ आइसिंग ऑन दैट ऑन हिज रिस्ट. लेकिन श्रेयस के लिए ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट ना शशांक, कंसिडरिंग दैट नाउ विराट इज नॉट देयर. सो ऑब्वियसली विराट विल कम बैक इन द थर्ड टेस्ट एंड only one out of him and KL Rahul can play in that position. तो obviously श्रेयस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरह से वो जो है काउंटर करते हैं इंग्लैंड स्पिनर्स को, क्योंकि ऑब्वियसली वी एक्सपेक्ट श्रेयस टू डू द बैसबॉल अगेंस्ट इंग्लैंड स्पिनर्स ओवर हियर, बिकॉज दैट्स द काइंड ऑफ स्ट्रोक मेकिंग ही हैज़ एंड उसी तरह से वो खेलते हैं. हमने हमेशा देखा है श्रेयस को कि वो जो है स्पिनर्स के अगेंस्ट जो है अपने पैरों का इस्तेमाल करके फास्ट स्कोरिंग करते हैं. तो क्लियरली श्रेयस
श्रेयस जिस तरह से अभी रणजी में भी गए, वहाँ पे भी उन्होंने जो है जो पारी खेली, एक फास्ट पेस्ड पारी खेली, इसलिए खेली क्योंकि उनको पता है कि उसी तरह का गेम है उनका। तो शशांक, क्लियरली श्रेयस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ये पहले 2 टेस्ट मैचेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनको फर्स्ट 2 टेस्ट मैचेस, बट हैविंग सेड दैट, नाउ दैट विराट इज इन देयर, the experience and the onus is on Shreyas Iyer to kind of deliver at number 5 or number 6 जहाँ पे भी वो खेलेंगे. I think Shreyas Iyer, this series will really be a test for him in many ways, because जब वो डेब्यू किया इंडिया में टर्निंग ट्रैक्स में न्यूजीलैंड के साथ, मे बी द न्यूजीलैंड अटैक wasn't the strongest, it was still a decent attack, and he struck 100 on debut in Kanpur on a slow turner. But यहाँ पे on these surfaces you'd expect the ball to fizz around a little bit, and Shreyas Iyer is one such batsman who won't probably graft or grind his way in. Natural stroke maker है, or I think sometimes on these wickets where it's going to turn from day one, which we assume it will, you don't want somebody just hanging around there. You know, you want to push the game forward, you want to score runs, you want to take the bowlers on, and I think considering that in mind, I think Shreyas Iyer's game is perfectly suited for these kind of surfaces where, you know, you're going to take the surface out of the equation by actually looking to score and go after the bowling. So I think you know, this is the kind of game plan that Shreyas Iyer anyway naturally has. Now with the kind of surfaces that we'll see, I think it'll only suit him further. So it's important that he gets a good couple of knocks under him, because we all know South Africa was tough on him, tough on a lot of batters, except maybe say Virat or KL Rahul among the others. So yeah, I think it's important for Shreyas to get a good start in. He's prepared well. He played the Ranji game, which I think honestly was better preparation than playing a 2-day warm-up game against an England Lions on a surface that really we believe didn't turn as much as, you know, you would have liked, because obviously the Indians didn't want to give England that kind of preparation where they, you know, they play turners straight away. So it was a fair wicket. It was a wicket that really didn't turn a lot. So playing a Ranji game as against that was way better preparation. And he's also been training with his personal coach in Bombay before linking up with the side. So he's had extensive preparation on each of those. After each of those Ranji game, at the end of the day, Iyer had a long batting session at the BKC ground. So in terms of preparation, I think he's ticked most boxes. It's an important series nonetheless for him, and I think his game will be well suited to, you know, carry it forward. That's very interesting insight about just how hard he's been working. जैसा शशांक भाई ने हमें बताया कि अपने मैच के बाद भी वो तैयारियां कर रहे हैं, अपने कोच के साथ प्रेपरेशंस कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, और वो जो रन्स नहीं आए हैं कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका में, उन्हें भी हर्ट कर रहे हैं. लेकिन उन्होंने एक बात कही जो अब हम चर्चा भी कर रहे थे इस बारे में, कि अग्रेसिव खेलना चाहेंगे. वो कहते हैं मैं बोर हो जाता हूँ अगर मैं गेंदें छोड़ता रहता हूँ, तो मेरा स्टाइल अग्रेसिव क्रिकेट खेलने का है, मैं चाहूँगा अग्रेसिव क्रिकेट खेलना. और अगर उन नंबर्स पर भी आप नज़र डालें तो जिन परिस्थितियों की बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले हमें बताया शशांक भाई ने कैसे कानपुर के उस स्लो ट्रैक पर उन्होंने करा 20 पारियों में औसत 40 के आसपास, रन 707 के आसपास. लेकिन अगर स्पिन के विरुद्ध आप नंबर्स देखेंगे तो वो बेहतर हो जाते हैं. 9 बार आउट हुए हैं, लेकिन 50 से ऊपर की औसत, 450 से ज्यादा रन 14 पारियों में. तो ये दर्शाता है कि आपको वो जो मिडिल ओवर्स में स्पेशली भारतीय परिस्थितियों में चाहिए रोहन भाई, एक ऐसा बल्लेबाज जब स्पिन लग जाती है, गेंद पुरानी हो जाती है, तो एक अग्रेसर चाहिए आपको टू हैव दैट बिग स्कोर ऑन द बोर्ड. श्रेयस इज अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दैट. वही बात कर रहे थे ना हम अभी कि जिस तरह से उनका जो गेम प्लान होता है स्पिनर्स के अगेंस्ट, वो वही है कि उनको स्पिनर्स को अटैक करना है. और जैसे भी अभी आपने कहा कि ही गेट्स बोर्ड, एंड दैट्स अ वेरी कैंडिड कन्फेशन ना शशांक. आई मीन लाइक कितनी बार जो है हमने इंडियन क्रिकेटर को ऐसे बोलते हुए कहा है कि यार नहीं, मैं अगर जाके अगर डिफेंस खेलता रहूँगा तो मैं बोर हो जाऊँगा, उससे अच्छा जो है मैं कहीं ना कहीं अटैकिंग क्रिकेट खेलूँगा. इज़ अ वेरी कैंडिड. हमने कभी ऐसी स्टेटमेंट्स जो है इंडियन क्रिकेटर से हम काफ़ी कम सुनते हैं. शशांक भाई आप ही बता पाएंगे इसके बारे में. Very few cricketers who's very honest and open about how he feels about a certain passage of play. I remember a Ranji game 5 years ago where with the one that Gujarat won, where they kept attacking him, and you know, attacking him in a negative line, trying to bowl outside leg, trying to frustrate him, and he just kept stepping out of leg and trying to hit them over the top because he was really bored. And he made 82 odd in that innings against spin on a final day surface. And after that he said that, look, I can't just sit and hang around here. I have to take the game forward. I have to score runs. So that's the kind of personality that he is. Yeah,
That's right, and that reflects in their statements as well, as we've kept talking about it. थोड़ा अलग अंदाज है क्रिकेट खेलने का, बेबाक हैं अपनी बातों में भी क्रिकेट के बारे में अगर वो बात करते हैं तो। और जैसा अभी हमें थोड़ी देर पहले रोहन भाई ने बताया कि वो नेट्स में थे, वो सिमुलेट करना चाहते हैं, अपने आप को चैलेंज करना चाहते हैं। थोड़ी सी चोट भी आई, लेकिन द गुड न्यूज़ इज कि वो सही हैं। उसके बाद आए, बल्लेबाजी करी उन्होंने और चाहते होंगे वो बड़े रन बनाना, क्योंकि कंपटीशन है, उसे एक स्पॉट के लिए कंपटीशन है। जब विराट तीसरे टेस्ट मैच में वापस आएंगे तो कैसे समीकरण बैठेगा, वहां जाने के लिए आपको रन बैंक बनाना पड़ेगा और इससे अच्छा मौका कोई हो नहीं सकता। मौका फिलहाल ये है कि आईसीसी ने टीम्स अनाउंस कर दी हैं, T20I टीम, ODI टीम, टेस्ट टीम। तो सबसे पहले T20I टीम ऑफ द ईयर पर नजर डालते हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या कैसी दिख रही है आईसीसी की मेंस T20I टीम ऑफ द ईयर। सूर्य कुमार यादव कप्तान, आई थिंक T20 जी 4 खिलाड़ी हैं वहां पर। यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव हैं। मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूं कि वहां पर रिंकू सिंह नहीं दिख रहे हैं। अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई वो 4 भारतीय खिलाड़ी, उनके अलावा फिल सॉल्ट, निकोलस पूरन, मार्क चैपमन, सिकंदर रजा, अल्पेश रमजानी युगांडा के, मार्क एडियर और Richard Ngarawa. Agreed with this, gentlemen? Shashank bhai, how do you read this ICC men's T20I team of the year? Yeah, as you said, slightly surprised Rinku isn't there, but I think the sample size that Rinku brought in, especially towards the end of the year, was perhaps slightly lesser than what a Sikandar Raza brought to the table as a finisher, and also Sikandar Raza offers a bowling option, so I think that's why Rinku may have been pipped. Jaiswal has had a very good year, but I'm slightly surprised to see him there. I think New Zealand's Finn Allen may have kind of pipped him, but again, I think that's recency bias would have come into the picture if we had picked Finn Allen. So I think it's overall a good team. It looks solid. And remember, these don't consider T20 leagues. It's only international cricket that's been factored in. And that's probably one of the reasons why you don't see some of the others, Kyle Mayers, Quinton de Kock, example, even in consideration, because they've had great years in T20 cricket, in the leagues, not so much in international. But this factors in only the international, games. And that's why this team looks fairly different to what we'd otherwise expect. But it's great to see, Surya Kumar Yadav, fantastic year as a captain, also led India to that series win against Australia after the World Cup, made hundreds in the format for fun. Yashasvi Jaiswal gave an excellent start in the games that he's had. So I think it's good to see 4 Indians there. Arshdeep Singh has been well deserved. He's got opportunities over the last 2 years to make a name for himself in white ball cricket. And Ravi Bishnoi, clearly, at the moment it appears that he is India's number 1, wrist spinner in the 11. Yeah. Yes, there is Kuldeep Yadav, but in T20 cricket, they seem to prefer Ravi Bishnoi's quick skidding leg breaks. And we saw him, deliver in that crunch game against Afghanistan, the one that in the super over, that went to 2 super overs, he's delivered. So yeah, it's overall a good side. Good to see 4 Indians in the mix. Yeah. In the second super over. He didn't bowl the first super over. We have to clarify with that game. But ODI टीम पर नजर डालते हैं। ICC मेंस ODI टीम ऑफ द ईयर 2023 बहुत अच्छा साल था भारत के लिए ODI क्रिकेट में। वो ट्रॉफी नहीं आई, लेकिन वो जो प्रदर्शन है वो दर्शा रहे हैं अपनी प्रेजेंस यहाँ पर इस प्लेइंग 11 में भी। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, 6 भारतीय खिलाड़ी ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। रोहन भाई, वनडे जिस तरीके से वनडेज खेला है भारत ने पिछले पूरे साल 2023 में, जैसा मैंने कहा, वो ट्रॉफी नहीं आई होगी जरूर, लेकिन जो प्रदर्शन आए हैं वो डिजर्व करते हैं यहाँ अपनी जगह। एब्सोल्युटली। और कहीं ना कहीं सो बेसिकली प्रॉब्ली ओनली थिंग वुड हैव बीन कि क्या जसप्रीत बुमराह इस टीम में आ सकते थे या नहीं आ सकते थे, बिकॉज दैट्स द ओनली वन क्वेश्चन, बिकॉज ही हैड अ फैंटास्टिक वर्ल्ड कप आल्सो। तो प्रॉब्ली दैट कुड बी द ओनली क्वेश्चन दैट वी कैन रेज ऑन दिस टीम। जसप्रीत बुमराह आ सकते थे इस टीम में। पॉइंट तो है क्योंकि कई दफे विकेट्स टैली में जो चीज नहीं दिखती है, हो सकता है कि कई दफे जो प्रेशर हम सुनते आते हैं अपने एक्सपर्ट से कि एक एंड से जसप्रीत बुमराह बनाते हैं जिस वजह से दूसरे छोर पर विकेट्स मिलते हैं, और इस पूरे वर्ल्ड कप भी हमने देखा था। तो दैट इज राइट, जसप्रीत बुमराह का वहां ना होना थोड़ा तो खल रहा है बतौर फैंस, बतौर दर्शक। हमको हमारे एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इरफान पठान और संजय मांजरेकर इन टीम्स के बारे में, आइए सुनते हैं। देखिए, ओडीआई पूरे साल की टीम की बात हो रही है यहाँ पे। जाहिर सी बात है, अगर मेरी टीम में किसी प्लेयर को लेना है तो मैं सबसे पहले जसप्रीत बुमराह का नाम लिखूंगा ही लिखूंगा, क्योंकि वो क्वालिटी जिस तरह से लेके आते हैं। लेकिन इंजरी की वजह से वो पूरे साल खेले नहीं, और वहाँ पे बाकी खिलाड़ी पूरे साल खेले। तो यहाँ पे जब पूरे साल की जब टीम बनती है, टीम ऑफ द ईयर बनती है, उसमें वो देखा जाता है कि पूरे साल कौन खेला है, कितनी मैचेस खेली, कितने विकेट निकाली है, लॉन्जिविटी कितनी है। तो उस वजह से जसप्रीत बुमराह का वहाँ पे चयन ना होना मेरे लिहाज से लेजिट भी है, सिर्फ बिकॉज क्योंकि बुमराह इंजर्ड थे। अगर बुमराह इंजर्ड नहीं होते
और पूरे साल खेलते और फिर वो ना होते, तो फिर मैं ज़रूर बहुत सारे सवाल खड़े करता, लेकिन यहाँ पे ये बात समझ में आती है। Must confess, a little surprised that Bumrah hasn't made it in the ICC One Day International Team of the Year, and Mohammad Siraj has. I know Siraj bowled superbly, but maybe Bumrah's numbers may have gone against him. But you've got to realize when Bumrah comes into bowl, most teams are looking to just play him out. Bumrah in the World Cup was the best seam bowler by far, so I'm a little surprised there. So they are as surprised. हमारे एक्सपर्ट्स भी उतने ही अचंभित हैं. वो कह रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह का वहां ना होना, irrespective जितने numbers हैं उनके. Do you agree with that, Shashank bhai? I mean, the numbers may be better for players like Mohammad Siraj and Mohammad Shami, but how do you leave out the class of Jasprit Bumrah? Yeah, it is slightly surprising that Bumrah hasn't made it to the 11. I'm sure there would have been plenty of deliberations on who he comes in for. But after the World Cup, the kind of World Cup that Siraj had, you couldn't have potentially left him out. So that would have meant that he comes in with Shami. I'm sorry, Shami had a great World Cup, so he would have obviously been a shoo-in. So it would have been Siraj versus Bumrah, and we all remember Siraj's spells in that Asia Cup final where he just came in and ran through the Sri Lankan batting lineup, 50 all out. I think that weighed heavily in Siraj's favour, and that may have slightly tilted the scales in his favour. And the fact that Bumrah came in to play in the back end of the year towards August, September after his back injury, that may have kind of gone against him, because after that it was just the World Cup, and he was phenomenal at the World Cup. But it's slightly surprising to see Bumrah missing. But I think Siraj, singularly, I think he also deserves having having found a place there, having the kind of year that he's had. No, absolutely nothing to take away from either Mohammad Siraj or Mohammad Shami. And I mean, you rightly pointed out that Asia Cup final, there was another game against Sri Lanka where he was breathing fire again, right here at the Wankhede Stadium in the World Cup, in the 2023 World Cup. So yeah, he really likes playing against Sri Lanka, and he rigged in a number of wickets. अगली बारी ICC Men's Test Team of the Year, और यहाँ पर कुछ ऐसे नाम जो इंडियन फैंस देखेंगे और कहेंगे इन्होंने ना इस साल हमें बड़ा दुख दिया है. ऑस्ट्रेलियंस ऑफ कोर्स रूल द रूल्स. आप चाहे उस्मान ख्वाजा की बात कर लें, तिमुत करुणारत्ने, ऑफ कोर्स अगर टेस्ट टीम ऑफ द ईयर की बात होती है, मोर ऑफ्टन देन नॉट आप उनका नाम वहाँ पाते हैं. केन विलियमसन, जो रूट, फिर आते हैं ट्रेविस हेड, एलेक्स कैरी, ऑफ कोर्स रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की स्पिन जोड़ी को वहाँ होना है. फिर पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और उनके साथ स्टुअर्ट ब्रॉड, जिनका कमाल का साल रहा. उन्होंने अलविदा कहा टेस्ट क्रिकेट को. लुक्स गुड, लेकिन थोड़ा सा दर्द देती होगी ये टेस्ट टीम जब देखेंगे भारतीय फैंस इनको. रोहन भाई. Absolutely, yeah, because we are used to seeing a couple of Indian batsmen in the Test team of the year. Obviously, you have Jadeja and Ashwin, so no complaints in terms of that. लेकिन Indian batsman missing out, कहीं ना कहीं वो hurt होगा, क्योंकि बहुत कम होता है कि Indian batsman हमें Test team of the year में नहीं दिखते. Otherwise, यार Australians dominated the year, so obviously you expect Pat Cummins, Mitchell Stark to be there, but Indian batsman not there. That's like something which probably everyone will reflect on how the year went for the India. Would you, if you had to bring one Indian batter in from the year gone by in this Test team, Shashank bhai, who'd that be? And who'd you replace him with? Two questions. Yeah, that's a very good question, actually. I mean, looking at the lineup, formidable lineup, I think the fact that India played on tough wickets where they really didn't have the kind of batters who could make big hundreds may have potentially gone against them. You look at the year, you saw the 4 test matches, the Border Gavaskar series against Australia in February, March, on turners where 50 was equivalent to 100 or 150. So the fact that I think if you're looking at pure numbers, it'll say that India probably didn't have the kind of batters who put up big runs. But I think Virat Kohli had a great year as a batter. I mean, he was batting really well, even in South Africa in those last 2 tests. And I understand that the second test was earlier this year, so it may have technically not qualified. But he was batting beautifully across formats, whether it's test, one day. He didn't play a lot of T20 cricket, of course. So I think Virat Kohli could have been in close consideration. But having said that, the fact that India didn't have a great run, of long scores, big scores from their batters, may have gone against them. That's actually interesting. कई दफे
क्वांटिटी पर ज्यादा चर्चा होती है, क्वालिटी पर चर्चा नहीं होती है. बट द मोमेंट शशांक भाई टॉक्ड अबाउट दोस इनिंग्स ऑन टफ ट्रैक्स जहां पर शायद आपका अर्धशतक एक शतक के बराबर हो, उसको भी वेटेज मिलना, उसके बारे में I भी think चर्चा the चलना बहुत Ajinkya जरूरी है. Rahane Yeah. knocks in the WTC final, they were Fair enough. priceless. They were very, very valuable runs on those wickets in those conditions. Simply for the fact that he was coming back into the Test match team, making a comeback, and the way he batted, I think he scored 89 in that first innings. Again, some top He did, quality yeah. bowlers: Mitchell Starc, Josh Hazelwood. I think that had he got 100 there, I mean, that would have kind of tilted the scales a little bit in his favor. But the fact is that the two subsequent innings he had in the Caribbean didn't yield too many runs, and India were anyway bossing over West Indies in that series, so that kind of went against them. Pujara had a great couple of knocks against Australia, but couldn't, convert and make a massive one. So they all had their moments, but unfortunately missed out because the daddy 100 was kind of missing from the tally in Test cricket this year. So will be interesting to see if that changes beginning with the England series starting on the 25th. The fans are saying that must, Shashank bhai, they're saying that must. We must see some big daddy hundreds and then turners and just give it to the Bazball. Of course, ये सब चर्चा होती रहेगी. पोस्ट टेस्ट मैच के बिल्डअप के बारे में बात करेंगे, थोड़े और डिबेट्स करेंगे इन टीम्स के बारे में, टीम्स ऑफ द ईयर के बारे में, लेकिन आज नहीं. आज हो गई है छुट्टी. बहुत बहुत शुक्रिया रोहन देशमुख का, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक किशोर का हमारे साथ जुड़ने के लिए. आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन मैं रोज क्यों शुक्रिया कर रहा हूँ आपको? मुझे पता है आप आ जाओ 5 बजे. कल भी आओगे 5 बजे, आओगे ना? पक्का प्रॉमिस? तो चलो फिर कल मिलते हैं शाम को 5 बजे.